नमस्कार दोस्तों, वीडियो सीरीज द्वारा कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स के संवैधानिक पहलुओं को उजागर करने के इस प्रयास में आज का विषय है द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा का स्थान हमारे देश में क्या है? वेल, पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेजेस। आर्टिकल 343 डिक्लेयर्स दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी and that English shall continue to be used in official correspondence for a period of 15 years only। यानी कि हिंदी हमारी राजभाषा है और सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का उपयोग केवल 15 साल तक यानी कि 1965 तक ही किया जा सकता है। Then there is Article 344 which talks about progressively restricting use of English even in the official correspondence। 8th schedule of the Constitution include list of 22 Indian languages। इसमें भारत की करीब करीब सभी क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान दिया गया है। बिसाइड्स रीजनल लैंग्वेजेस देयर इज संस्कृत, देयर इज हिंदी, इवन नेपाली इज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट ऑफ 22 इंडियन लैंग्वेजेस। हाउएवर इंग्लिश इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल। इस तरह यूँ लगता है कि हमारे संविधान में अंग्रेजी भाषा का कोई स्थान ही नहीं है, बट दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज देयर आर अदर प्रोविजंस इन फेवर ऑफ इंग्लिश। But the foremost fact is that when our constitution was adopted on 26 November 1949, it was the English version of the constitution which was adopted। संविधान का हिंदी संस्करण उपलब्ध था। वो बनाया इसलिए गया था कि उसे संविधान सभा द्वारा स्वीकृति दिलाई जाए। But the fact is only English version was adopted and therefore only English text of the constitution is deemed to be authoritative। Coming to other provisions in favor of English, as per Article 348, the language for proceedings of Supreme Court and High Court shall be English। Further, the authoritative text of every act, bill, order, rules, regulation, bylaws passed by Parliament or state assemblies shall be in English। अगर कोई राज्य सरकार अपना कानून अपनी क्षेत्रीय भाषा में बनाना चाहती है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद होना अनिवार्य है। Not only this, only the English version of that legislation is deemed to be authoritative। So we can see that एक तरफ हमारे संविधान में अंग्रेजी के उपयोग को कम करने की, सरकारी कामकाज में 1965 तक समाप्त करने की बात की गई है। On the other hand, there are such provisions strongly in favor of English। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में अंग्रेजी के विषय में एक तरह से विरोधाभास है, डायकोटोमी है। The reason for this dichotomy is that before independence nearly for 150 years, English was the official language of British administration। आज़ादी के दौर में और विशेष रूप से संविधान सभा की चर्चा के दौरान ये एक भावना बनी कि किसी एक भारतीय भाषा को राजभाषा या राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क की भाषा का स्थान देना चाहिए। क्योंकि हिंदी हमारे देश में बहुत बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा थी, तो स्वाभाविक रूप से इस स्थान के लिए हिंदी का चुनाव हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली द प्रोटैगनिस्ट ऑफ हिंदी लिंक्ड प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ हिंदी विथ रिमूवल ऑफ इंग्लिश। उनका दृष्टिकोण था कि हमने अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया है, अब इस विदेशी भाषा को भी इस देश से हटाना है। इट वॉज दिस अप्रोच दैट वी हैव प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ इंग्लिश और कंप्लीटली बैन यूज ऑफ इंग्लिश इन द ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस बाय 1965। Well, as the deadline of 1965 approached, there were huge protests by the southern states। In the face of those protests, Government of India amended Official Language Act, making provisions for continuation of English in the official correspondence for indefinite period, practically making English a second official language of the Union। But coming back to those protests commonly remembered as anti-Hindi agitation, the agitation of the southern states was not as much against promotion of Hindi, but it was against the ongoing campaign against English as foreign language। ये बात एक उदाहरण से स्पष्ट होती है। मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख सी राजगोपालाचारी, उन्होंने 1937 में हिंदी शिक्षा को मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूलों में अनिवार्य किया था। दैट इज लर्निंग ऑफ हिंदी वॉज मेड कंपल्सरी इन द मद्रास प्रेसिडेंसी बाय सी राजगोपालाचारी जी। But same Rajgopalachari ji in 1958 said that
Hindi is as much a foreign language for non-Hindi speaking southern states as English is foreign language for Hindi speaking states. Well, is it fair for anyone to stand up against English, calling it a foreign language? English language came to India along with British about 400 years ago. Chai, the humble cup of tea integral to our daily life, was introduced by British in India about 150 years ago. Drinking tea is not a foreign habit for us. जिस तरह से हमने चाय को अपनाया है, चाय को विदेशी आदत कहना हम सोच भी नहीं सकते. A similar view was expressed in the Constituent Assembly debate by an Anglo-Indian member, Mr. Frank Anthony. He had said that former British colonies have been using English for hundreds of years and therefore they have every right to call English as their own language. He further said that he does not believe that British have monopoly over English and that India should accept English as one of our own language. This was said by Mr. Frank Anthony in Constituent Assembly in 1949. तब से आज तक हमारे देश में हिंदी का काफ़ी प्रचार और प्रसार हुआ है, लेकिन अंग्रेजी का उपयोग कम नहीं हुआ है, बल्कि कहीं गुना बढ़ा है. Today in this era of globalization, having a very large English speaking population is our strength. So why not come to terms with this reality of English in our country? Why not give English language its legitimate place in the Constitution and remove the dichotomy that exists in the Constitution with respect to English? This can be done by including English in the 8th schedule of the Constitution. Remember, Nepali is already there. And it is not just about giving English language its legitimate place in the Constitution. It is about changing the narrative of conflict, that is narrative of Hindi versus English, to the narrative of coexistence, that is Hindi and English. If you think there is merit in this argument, if you find that there are any useful takeaways from this video, do like it, share it and give your feedback. Thank you. Jai Hind.